નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણા વિડીયોમાં એકમ કસોટી પેપર સોલ્યુશન જોવાના છે, એટલે સામાયિક મૂલ્યાંકન એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ. તેમાં આપણો વિષય રહેવાનો છે, વિષય રહેશે હિન્દી. દ્વિતીય સત્ર માટેનું પેપર રહેશે ઇકાઈ 1 થી 3. કક્ષા છે ધોરણ 7. કુલ અંક રહેશે 25. કુલ ગુણ 25 ગુણનું પેપર. પ્રશ્ન બેંક રહેશે. દિનાંક એટલે તારીખ છે 4/1/2025નું તારીખ રહેશે. તો સાહિત્ય તમારે પૂરેપૂરું પેપર સોલ્યુશન જોવાનું રહેશે. વિષય હિન્દી. દિનાંક તારીખ છે 4/1/2025. તો સાહિત્ય આપણે સોલ્યુશન હવે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો આપણે જોઈ તો પછી वाची ले कौन कारक के रूप में वाले प्रश्नों को उत्तर लिखित में रूप से देते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. विभाग 1 से. बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेगी? स्वयं सेवक का अर्थ क्या होता है? तो बेटी धरती पर उजियारा पढ़ लिख कर बेटी से આપણે જોઈએ તો એ તમારે એનો આન્સર તમને મળી જશે. સ્વયંસેવક કા અર્થ ક્યાં હોતા હૈ? સ્વયંસેવક એટલે કે આપણે જોઈએ તો બધાની સેવા કરતા હોય છે, જેને કોઈ પણ લાલચા હોતી નથી, એ स्वयंसेवक कहवामां आवे छे. चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय किस प्रकार दिया? तुमने पुस्तक में बैठू मળી जशे. आप पढ़ लिखना क्यों जाते हैं? तो पढ़ लिख कर आप बड़े आदमी बनना चाहते हो या नहीं? कमेंट કરીને જણાવજો. બધા પढ़ी लिखने से सारा एवा माणस बनवानी इच्छा હોય છે. तो पढ़ लिख के सब अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे है. પછી છે हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? તો પહેલી મોમબત્તી છે આપણે જોઈએ તો રાજ્યના કામ માટે હતી, ને બીજી મોમબત્તી છે અને ઘરના કામ માટે બીજી મોમબત્તી જગાવતા હોય છે, એટલે કે दूसरी मोमबत्ती जलाई. પછી છે बेटी धरती पर क्या करेगी? हमारे पुरखों ने क्या कहा है? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? अंत में वृद्ध महिला ने क्या कहा? विभाग 3 से बधाने तने जवाब पुस्तकमांथी बेठा मळी जशे. आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो बधाना सपना अलग अलग. कोई डॉक्टर बनवा मांगे, कोई वकील बनवा मांगे, कोई शिक्षक बनवा मांगता होय छे, कोई क्रिकेटर बनवा मांगता होय छे, एंजीनियर बनवा मांगता होय छे. अलग अलग बधाना विचार होय छे. आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? बेटी फूल जैसी सुंदर बनकर क्या बनना चाहती है? नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो આનો પણ જવાબ તમે જોઈ લો. નરેન્દ્ર છે આપણે જોઈ તો સ્વામી વિવેકાનંદની વાત અહીંયા કરવામાં આવેલી છે. તો આ જોઈ લો તમે સાહિત્ય અને તમારા ક્વેશ્ચનના આન્સર આપણે પછી કરાવી દઈશું. બધાને આપણે સારી રીતે મિત્રો કરાવી દઈશું. તો આપણે પહેલાં પરિષદના કરાવી દઉં, પછી બાકી કરાવી દઈશું. परिषद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. विभाग 1 से. माता पिता की सेवा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है. कितने दुख उठाकर कितनी विपत्तियां झेलकर वे अपनी संतान का पालन करते हैं. तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है? તેમાં આપણો જવાબ રહેશે અહીંયા પહેલામાં આ જવાબ આ રહેશે, માતા પિતા की सेवा करना हमारा कर्तव्य है. तो પહેલાનો આન્સર આ રહેશે. પછી છે माता पिता संतान का पालन कैसे करते हैं? तो माता पिता संतान का पालन कैसे करते हैं? तो એમાં આપણો જવાબ છે माता पिता संतान का, ये जो कितने दुख उठाकर, આ બીજા નંબરનો આન્સર છે. આ કરી લે, कितने दुख उठाकर, અહીંથી આ બીજાનો આન્સર રહેશે કે બીજા નંબરનો. कितने दुख उठाकर कितनी विपत्तियां झेलकर वे अपनी संतान का पालन करते हैं. પછી से माता पिता का बदला क्यों चुकाया नहीं जा सकता? तो माता पिता का बदला क्यों चुकाया नहीं जा सकता? तेम जो उनके उपकारों का, उनकी सेवा को बदला किसी प्रकार भी चुकाया नहीं. इतना होने पर भी यदि मनुष्य विद्या, यौवन और धन आदि के अभिमान में उनका सम्मान और शुश्रूषा नहीं करता, वो महाकृतज्ञ है. तो एवी रीते तमारे आंसर करी लेवो. पछी से कोण कृतज्ञ होता है? तो ये આપણે અહીં જોયું છે. અહીં જો इतना होने पर भी यदि मनुष्य એટલે કે એટલી બધી કષ્ટ દુઃખ ઉઠાવીને આપણી વિપત્તિ ઝેલ કર આપણા માતા પિતા આપણા સંતાનનું પાલન કરતા હોય, તો અહીંયા છે વિદ્યા યૌવન ધન આદि. તો આમાં છે તો અહીંયા ચોથાનો આન્સર આ રહેશે. પછી છે क्या करने से विद्या निष्फल हो जाती है? तो क्या करने से विद्या निष्फल हो जाती है? तो विद्या प्राप्त करके भी जो गुरु की शिक्षा की सेवा में मन नहीं लगाते, तो उनकी विद्या
નિષ્ફળ હો જાતી હૈ। તો આ 5માનો જવાબ આવી રીતે રહેશે। તો સાહિત્યનો જવાબ તમારે ટીક કરી લેવાનો રહેશે। આગળના ક્વેશ્ચન છે વિભાગ બી બીજો છે પરોપકાર से बढ़कर वो कोई पुण्य नहीं है। તેમાં જોઈએ તો પહેલું वेदों और उपनिषदों में क्या कहा गया है। तो અહીંયા जरूर वेदों और उपनिषदों में भी यही कहा गया कि भारतीय संस्कृति उपकार के लिए जानी जाती है। અને આમાં છે જો પરોપકાર से बढ़कर कोई पुष्प नहीं है। પહેલાનો આન્સર આવી રીતે રહેશે। पुण्य नहीं है। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा कैसे की। तो जो राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काट कर खिलाया था। बीजा नंबर नो आंसर આવી રીતે રહેશે। दूसरों के लिए किस किसने बलिदान दिया। तो એમાં તમારે જવાબ દેવો છે। અહીં જો महर्षि दधीची ने वृत्रासुर से रक्षा करने के लिए देवता को अपनी हस्तियां दान में दी थी। પછી राजा शिवी નું લખી શકો। આ ત્રીજાનો આન્સર આવી રીતે રહેશે। महान कौन है। तो महान कौन है તેનો જવાબ તમારે અહીંથી કરી લેવાનો રહેશે। જો उसके मुख पर आई मुस्कान के कारण यदि आप है तो आपसे महान और कोई नहीं। અહીં જો कष्ट में किसी का सहारा बनकर देखिए दुखी व्यक्ति दुख दूर हो जाने पर उसके मुख पर आई मुस्कान के कारण यदि आप है कारण यदि आप हो तो आपसे महान कोई नहीं है। तो चौथा नंबर नो आंसर આવી રીતે રહેશે। हम दुखी व्यक्ति से मुख पर मुस्कान कैसे लागते। तो આનો જવાબ પણ આ જ આવી જશે। તો સાહિત્યનો જવાબ આવી રીતે કરી લેવા। પછી છે વિભાગ 3 છે આ તમારે જોઈ લેવાનું છે स्वतंत्र भारत વિશેનું। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के कंधे पर है। साहित्य वाँची लेવું। પછી છે देश की એમ આપણે જવાબ જોઈએ देश की उन्नति और उत्थान किस पर निर्भर करता है क्यों। तो આપ જોઈ લો स्वतंत्र ऐसी भारत की उन्नति एवं उत्थान है। जो भारत की उन्नति एवं उत्थान उनकी उन्नति उत्थान पर निर्भर करता है। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी पर करें। क्या ये રીતે જવાબ રહેશે। અહીં છે स्वतंत्र भारत संपूर्ण दायित्व विद्यार्थी कंधे पर है। कारण અહીંથી તમે આ કરી શકો। કારણ जो विद्यार्थी वही कल के भारत के नागरिक होंगे એનું કારણ એ છે। राष्ट्र का शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों को क्या कर्तव्य है। तो राष्ट्रને આપણે જોઈએ તો शक्तिशाली बनावવા માટે તમે શું કરી શકો। तो આમાં તમારો જવાબ મળી જશે। किस प्रकार विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। तो जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपना जीवन का निर्माण नहीं करते वो राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। तो तीसरा नंबर विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए। तो भावी जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए तेमा जो आया इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करे। आ चौथा नंबर 5माનું છે परिषद को उचित शीर्षक दीजिए। तो આપણે યુવાઓ का ભાવિ ભવિષ્ય આપણે જોઈએ તો એ રીતે નાગરિક વિષયનું પણ તમે કંઈક પરિષદનો આપી શકો शीर्षक। પછી છે નિમ્નલિખિત વાક્યોं में से विशेषण छांटकर उसका प्रकार लिखिए। तो વિશેષણ આપણે આમાં કરાવી દઈશું પાર્ટ 2 માં। તો પાર્ટ 2 જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી જો। બધા હશે આપણે કાલ તમારે પહેચાનવાનું છે એ બધા ક્વેશ્ચન આપણે પાર્ટ 2 માં કરાવી દઈશું। આ ભાવાર્થ પણ સાહિત્ય આપણે કરાવી દઈશું। ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મિત્રો વિડીયોને એન્ડ કરીએ છીએ। જય હિન્દ જય ભારત।